नमस्कार आपण मान समस्त यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज ये वीडियो में आपण सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 3 यूनिट 2 किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन आपन सह शेयर करी। पूर्व यूनिट 1 किसी क्वेश्चन आपन सह शेयर करछि आ पूर्व 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी मो यूनिट वाइज सब वीडियो बन सारी। जदि आप देखी ना चैनल से देखिपारे आ वीडियो आगे मुझे कहबी आप पीडीएफ को किपर भाव पाइपर। तो चलते स्टार्ट करवा। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस बा न्याय माने कौन ना इन सिंपल टर्म्स जस्टिस इज एक्शन इन अकॉर्डेंस विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम लॉ। माने किसी आईन रो गोटे आवश्यकता रही जस्टिस वेदर दीज रूल्स आर ग्राउंडेड इन ह्यूमन कॉन्सेंसस और सोशल नॉर्म्स। माने कौन ना सामाजिक रीति आउ किसी मनुष्य एकतार जो मत सृष्टि होची ताकू नहीं गोटे रूल बना अच्छी माने आधारित तो गोटे नियम बना है जस्टिसटा से कौन से प्रकार एक्शन करछि। दे आर सपोज्ड टू इनश्योर दैट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रिसीव फेयर ट्रीटमेंट। आ से कौन मैंने सपोज कौन तथाकथित कहते जे जे सोसाइटी जो प्रत्येक जो मेंबर मैंने अच्छा से कि ना न्याय संगत समूह ट्रीटमेंट पाइबे। इश्यूज ऑफ जस्टिस एराइज इन सेवरल डिफरेंट स्पेस। जो जस्टिस अच्छे डिफरेंट स्पेस रही एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल इन कॉजिंग प्रिपेटिंग एंड एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट देखा हु प्रोपागेटेड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस सब एम किए प्रोपागेट करते ना द एंशिएंट इंडियन थिंकर्स सच एज मनु एंड कौटिल्य प्रोपागेटेड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो एम कौन करले ना इंडिया जस्टिस कौन ताको प्रसार करते न्याय को। मनु हैव डिवाइडेड द लॉ इनटू सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। मनु कौन कले लॉ को जो आईन को दुई भाग करते सिविल मैटर और गोटे क्रिमिनल मैटर। कौटिल्य हैव ओपन दैट टू ओनली स्टेट कैन प्रोवाइड फेयर जस्टिस। आ कौटिल्य प्रोवाइड करते कौन ना केवल स्टेट ही गोटे कौन न्यायसंगत जस्टिस को सी कौन प्रोवाइड कर। नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट इज स्पिरिचुअल जस्टिस। स्पिरिचुअल जस्टिस माने कौन ना स्पिरिचुअल जस्टिस माने इट इज सपोज्ड बाय मेनी पीपल दैट जस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। माने भगवान द्वारा न्याय कंट्रोल होची भगवान गॉड एनर्जी और फोर्स ये तीन जन द्वारा कौन होची ना गोटे जो जस्टिस न्यायटा कंट्रोल करची। इट ऑल्सो बिलीव दैट दिस इज एंटिटी इज डिस्पेंडेबल एंड एक्सरबिट्स परफेक्ट जस्टिस। और कौन करें ना परफेक्ट जस्टिस को प्रदान करेंगे। मोस्ट पीपल हु बिलीव इन स्पिरिट सुपरनेचुरल फॉर्म्स ऑफ जस्टिस can take comfort in the fact that justice will be served to everyone and are also deterred from doing what is wrong because they fear supernatural justice being brought upon themselves। तो से भावुले कौन ना गोटे सुपरनेचुरल बीइंग सब कौन कर लक्ष्य देखुं आगे किसी जस्टिस कौन जदि आम किसी भूल करें आमको से तार फल मिल। तो से जस्टिस जो कर समस्त परफेक्ट जस्टिस होती भितर गोटे कौन भय रोला। नेक्स्ट टाइम देखा व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। माने कौन बंटन संबंधी न्याय माने कौन इट इज कॉन्सेप्ट दैट एड्रेसिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स इन सोसाइटी। जो सब गुड्स अच्छी समाज में बंटन को गोटे एड्रेस कर ओनरशिप कर। इट एज्यूम्स माने मानि नेबा that there is a legal large amount of fairness in the distribution of goods. Equal work should be provided individuals with an equal outcome in terms of goods acquired or ability to require goods. Distributive justice माने बंटन संबंधी न्याय इज absent when equal work does not produce equal outcomes। माने जे कि इक्वल वर्क करता इक्वल जे वर्क कला ताको इक्वली आउटकम न मिले से वर्क करियो। और when an individual or a group of acquires a disproportionate amount of goods। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोसीड्यूरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस प्रक्रियात्मक बा न्याय प्रक्रियात्मक सिद्धांत माने कौन ना प्रोसीड्यूरल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड अपॉन दिस जस्ट एंड फेयर प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस जो डिमांड अच्छी तार से जो फुलफिलमेंट कर जो प्रक्रिया न्यायसंगत प्रक्रिया को प्रक्रिया पर ये कौन बेस्ड मैंने आधारित। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए थ्योरी अनुसार प्रोसीडर्स आर सम इम्पोर्टेंट देन द फाइनल आउटकम। माने कौन फाइनल आउटकम से रिजल्ट जहाँ भी हो ना कहीं जो प्रोसेस हो प्रक्रियाटा से मोस्ट इम्पोर्टेंट माने मोर बेसी आवश्यक। दिस थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट जस्टिस रिक्वायर्स ए मेटिकुलस फॉलोइंग ऑफ रूल्स। The procedures and understanding of justice depends individual behavior। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मध्य डिपेंड करछि। इट हैज नथिंग टू डू विथ द सोसाइटी। व्हाट इज आउटकम ऑफ मॉडल ऑफ प्रोसीड्यूरल जस्टिस। तो मॉडल ऑफ प्रोसीड्यूरल जस्टिस आउटकम कौन रही ना द आइडिया ऑफ द आउटकम्स ऑफ मॉडल एंड प्रोसीड्यूरल जस्टिस
is that the fairness of processes depends on the procedure proceeding correct outcomes. For example, if the procedure is a criminal trial, then the correct outcome would be conviction of guilty and exonerating means doshayukta the innocent. Principally, if two procedures proceed equal outcomes, equivalent कौन बराबर भाई, then they are equally just according this model. Next देखिबा, what is balancing model of procedural justice? The idea of balancing model is that fair producer मान न्याय संगत producer is procedure मान प्रक्रिया is one of which reflects a fair balance between the cost of procedure and benefit that is produces. Thus, the balancing approach to procedural fairness might in some circumstances माने किसी परिस्थिति be prepared to tolerate माने सहयोग करबा और accept false positive verdicts निर्णय in other avoid unwanted costs associated with the administration of criminal processes. तो ये कौन balancing model of procedural justice. Next देखिए what is participation of model of procedural justice. The model procedural justice रो माने model of procedural justice participation कौन the idea of participation model is that the fair procedure is one that affords those who are affected by opportunity to participate in making of a decision in context of a trial. For example, good example answer the participation model would be required that defendant be afford on opportunity. अपना opportunity defendant माने कौन प्रतिवादी afford an opportunity to be present at the trial to put an evidence cross examination माने प्रति परीक्षा witness and so forth. What is equality of opportunity माने equality of opportunity is found when all members of society are allowed to participate in acquiring goods. तो कौन जो सब प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक मेम्बर मैंने कौन करेंगे आलो हो पारे मैंने गोटे प्रत्येक मैंने आलो टू पार्टिसिपेट कौन भाग हो पारे टू एक्वायरिंग गुड्स. नो वन इज ब्लॉक फ्रॉम एक्वायरिंग मोर गुड्स. एक्वायरिंग फॉर मोर गुड्स वुड बी ए स्लो फंक्शन ऑफ विल नॉट बिकॉज ऑफ सोशल और पॉलिटिकल रीजन. व्हाट इज इक्वालिटी आउटकम. तो इक्वालिटी आउटकम माने कौन ना इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज मोर रिलेटिव. It does not guarantee that all members of a society will receive the same number of goods. It does guarantee the equal work of production and equal amount of goods. माने कौन करछि ना जे जति वर्क कर इक्वली वर्क कले इक्वली ताको प्रोड्यूस मिलिबो. तो इक्वल अमाउंट रो ताको कोन गुड्स मिलिबो. तो इथले इक्वालिटी ऑफ आउटकम. व्हाट इज प्रोसीड्यूरल थ्योरी अकॉर्डिंग टू नोजिक. This theory states theory कहूँ कौन that each every individual is responsible for his or entitlement. This also mean that the state would have no authority to influence in matter of individual entitlements. तो कौन स्टेट किसी कौन कर अथॉरिटी जाऊनी जे से कौन कर इंडिविजुअल सब मैटर जन रही से किसी इंटरफेरेंस कर पारिबो. एटा कौन प्रोसीड्यूरल थ्योरी अकॉर्डिंग टू द नोजिक. नेक्स्ट देखिबा व्हाट आर द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू रॉस. रॉस कर माने जो जस्टिस पई माने किसी दरकार आवश्यक जो प्रिंसिपल सिद्धांत रही कौन कौन ना रॉस सेट फॉर द डिटरमाइन द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ऑन व्हिच ए गुड सोसाइटी मे बी बेस्ड. गोटे भल सोसाइटी उपर कौन बेस थी. ही एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विथ टू की प्रोपोजेस. दीटा की प्रपोज करेंगे से कौन प्रिंसिपल को इंपोर्टेंट जो प्रिंसिपल को दीटा जो इंपोर्टेंट ऑफ जस्टिस इंपोर्टेंट को से कौन दुईटा प्रिंसिपल जो दुईटा की रे प्रपोज कर फास्ट टू प्रोवाइड ए वे असाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट एंड सेकेंडली टू डिफाइन द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स एंड ब्लोन्स ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट देखिए व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन रॉस थ्योरी. तो रॉस थ्योरी माने बंटन जो जस्टिस रही बंटन संबंधी न्याय मान कौन सिद्धांत ना द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज रॉस थ्योरी रिक्वायर्स दैट ऑल कोर्ट्स शुड टेक ए लिबरल व्यू ऑफ परमिसेस माने कौन परिसर ऑफ लॉ एंड सो इंटरप्रेट माने व्याख्या
them also to distribute benefits to the largest number of people so that the harsh of effects of the technicalities ମାନେ ଶବ୍ଦାବଳୀ technicalities ମାନେ ଶବ୍ଦାବଳୀ of law are connected within the narrowest limits distribute justice concern institution in a society. नेक्स्ट देखा व्हाट इज ग्लोबल जस्टिस तो ग्लोबल जस्टिस माने कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस केम टू द फोर्स अगेंस्ट दिस वेल एस्टाब्लिश्ड नोशन मान धारणा इन एन इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आवर लिव्स आर कनेक्टेड टू द पीपल आम लिव्स कौन पीपल लोक सहित कनेक्ट होची whom we don't know मान जहाँ को हम जान न थाऊ एंड whom we never meet आ जमान देखि भी न थाऊ environmental issues टेररिज्म प्रोपर्टी इन्वायरमेंट इश्यू कौन जो सब प्राकृतिक कारण टेररिज्म नक्सलवाद टेररिज्म प्रोपर्टी दरिद्र जेंडर इश्यूज किसी जेंडर इश्यूज एंड अदर सच इश्यूज constitute the main thread of this interconnectedness माने अंतर्योजनात्मक द नेक्स्ट टाइम देखिए we are connected to each other whether we want this or not. In this intensified situation of global interconnectedness, the commitment to justice cannot be limited to the nation state alone. Next देखिए माने कौन ना ग्लोबल जस्टिस रही है कौन हो स्टेट लिमिटेड होनी कि कौन नेशन एका लिमिट होनी से पूरा ग्लोबाली से जो स्टेट जस्टिसटा आम सब कौन सब वर्क कर व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट तो कैपिटल पनिशमेंट माने हम मृत्युदंड कह मृत्युदंड माने कौन कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो नोन एज डेथ पेनाल्टी कैपिटल पनिशमेंट कौन मृत्युदंड है जनाशुना इज ए गवर्नमेंट सैंक्शन प्रैक्टिस वेयर बाय ए पर्सन इज पुट डेथ बाय द स्टेट ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम जो कौन यहाँ गवर्नमेंट सैंक्शन में स्वीकृत करती केतबेले ना जिते कौन व्यक्ति से कौन कर किसी क्राइम करते से क्राइम पनिशमेंट पे कौन मिलता है डेथ मिलता डेथ मैंने मृत्युदंड मिलता the sentence that someone be punished in such manner is referred as a death sentence whereas the act of carrying out the sentence is known as execution କାର୍ଯ୍ୟବାହ crimes that are punished by the death are known as capital crimes or capital offenses. Write the name of capital offenses माने अपराध and the name of the countries where death penalty is retained. नेक्स्ट देखा द कैपिटल ऑफेंसेस इंक्लूड ऑफेंसेस सच एज मर्डर करिबारी ना ट्रिसन माने राजद्रोह एपियोनेज माने कौन एपियोनेज माने जासूसी वार युद्ध क्राइम जो विभिन्न क्राइम एगेंस्ट ह्यूमैनिटी नरसंहार जो कुछ करबा सॉरी क्राइम एगेंस्ट ह्यूमैनिटी माने मनुष्यत्वर विरोध किसी काम करबा जेनोसाइड माने नरसंहार ओवर 60% ऑफ दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन कंट्रीज वेयर द डेथ पेनल्टी इज रिटेन्ड such as China, India, United States, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Japan and Sri Lanka. Which are the countries that impose a mandatory death sentence for the possession of small amounts of illegal drugs and which are the countries that execute criminals regularly? Iran, Singapore, Malaysia and Philippines impose a mandatory death sentence for the possession of relatively small amounts of illegal drugs and some countries include Belarus, Congo, Iran, Jordan, Nigeria, Saudi Arab, Singapore, Arabia, Taliban, Vietnam and Yemen execute criminals regularly. Next देखिबा what is the meaning of justice रो अर्थ कौन what was justice in the past not justice in the present day therefore it is difficult to define justice माने justice को माने जो डिफाइन करबाटा बहुत कष्ट difficult in the ordinary sense justice means justice माने to give an aggrieved party what is due to it and punish an individual or a group of individual or an agency whenever an offense is committed. What are the important of elements of justice? Justice of important element माने कौन रही
द इम्पोर्टाट एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस आर लॉ आईन लिबर्टी स्वतंत्रता राइट्स अधिकार इक्वालिटी समानता दिस इनक्लूड्स फ्रैटर्निटी ऑल्सो माने भाईचारा मध्य ऑल्सो ये सब कौन जस्टिस गोटे एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द origin of justice justice origin कोठी ना justice derived from latin word justitia तो justice टा कोन latin word गोटे justitia आसी अछि जहार अर्थ होछि कोन ना meaning the idea of the word joining or fitting द कोन word अर्थ joining or fitting the idea of bond or tie justice is an important concept of politics philosophy law and ethics justice न्याय गोटे important concept माने गोटे important concept इन कोन ना politics रे फिलोसफी दर्शन रे आईन रे आउ एथिक्स मोरालिटी मध्य। नेक्स्ट देखिए नैतिकता एथिक्स माने व्हाट आर द थ्री काइंड्स ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू आइस्टल आइस्टल से जस्टिस माने कोन ना दे आर से गुड कहला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने कोन ना गिविंग पनिशमेंट टू एन इंडिविजुअल फॉर द क्राइम कमिटेड बाय हिम जो से जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो क्राइम करथियो ताको से हिसाब रे कोन क्राइम करथियो ताको से पनिशमेंट कह जो पनिशमेंट दिया जाय कोन अन्य जो व्यक्तिटा जे हेतियो ताको कोन न्याय मिलियो। कम्पेनसेटरी जस्टिस माने कौन टू गिव कम्पेनसेसन टू ए विक्टिम ऑफ क्राइम मनर गोटे क्राइम जन करथियो जे क्राइम जन ऊपर करथियो मनर ए बी ऊपर क्राइम कला ताहले कोन करे बी से ए रे बी को कम्पेनसेसन द माने तार कुछ भरपूर करियो से जो क्राइम दे करछि सी। नेक्स्ट देखा redistributive justice माने कौन ना बेनिफिट्स एंड प्रूवेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड Aristotle ideas on moral and justice are found in his book entailed माने बुक रे फाउंड कोन ना निचोमैचिन एथिक्स बुक रे तासे सब कोन Aristotle सब कुछ लिखचंती। नेम ऑफ द सोर्स ऑफ जस्टिस सोर्स कोन रहछि सोर्स ऑफ जस्टिस मीन द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस सर अर्नेस्ट बार्कर हैज आइडेंटिफाइड दैट देयर आर फोर सोर्स ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस चारोटी सोर्स उत्स रही देर आर से गुड गला रिलीजन धर्म नेचर प्रकृति इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। व्हाट इज मीन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ जस्टिस तो जस्टिस एवोल्यूशन कि भाव कौन है ना जस्टिस इज एसेंशियली नोरेटिव कॉन्सेप्ट कटिंग अक्रॉस द डोमिनेंस ऑफ रिलीजन्स एथिक्स एंड लॉ थ्रू हिज रामिफिकेशंस माने कौन ना प्रभाव over cover social political and economic domains so great is the diversity of it connotations that it is not easy to abstract to one on specific meaning generally justice is associated with the judicial organization माने justice माने कास तो लाकी मेल खाइ थाउची ना associated माने कास तो थाउची से ना judicial justice so न्याय जो judicial माने न्याय देबा जो सब ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन जाक जो संगठन न्याय रोची से जस्टिसटा एसोसिएट थाउची। नेक्स्ट देखिबा हाउ कैन जस्टिस बी एन्श्योर्ड इन ए सोसाइटी जस्टिस कैन बी एन्श्योर्ड इन ए सोसाइटी ओनली व्हेन द सोशल सिस्टम इज फ्री फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन ऑफ मेन बाय मेन माने जस्टिस केतल गोटे एन्श्योर हे सोसाइटी हम कहि पारे जेतले कोन होतो ना कोनोसी मध्ये सामाजिक कौन से गोटे शोषण हो गोटे मनुष्य आ गोटे मनुष्य शोषण कर एंड वेयर द प्रिविलेजेस ऑफ द फ्यू आर नॉट बिल्ड अपन हिज मिसेज ऑफ द मेनी माने किसी विषेधाधिकार न जन समस्त गोटे इक्वालिटी थी इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन द वर्ड्स ऑफ डैनियल वेस्टर हु सेड जस्टिस इज द डीपेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मैन। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज लीगल जस्टिस तो लीगल जस्टिस माने कौन ना legal justice is related to the law making process and in the judicial system of society legal justice जो आईनगत जो legal माने आईनगत सब कोन न्याय कोन ना से कहा को रिलेट करछि ना रिलेट टू द लॉ मेकिंग प्रोसेस आईन तैयारी करा प्रोसेस सहित रिलेट करछि ता सहित जुडिशियल सिस्टम माने समाज जो जुडिशियल सिस्टम रहिछि न्याय देबा जो सब व्यवस्था बा सिस्टम ता सहित से कोन रिलेटेड करछि इट हैज टू स्पेसिफिक मीनिंग्स आर दुटी मीनिंग अछि फर्स्ट कोन लॉ शुड बी रीजनेबल सेकेंड each one should get justice according to law। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज एथिक्स माने कोन दिस इज अनदर सोर्स ऑफ जस्टिस एरा जस्टिस गोटे कोन अन्य एक उपादान बा उत्स द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज दैट रेंडरिंग ऑफ जस्टिस should have its based on moral
एंड सेंस ऑफ डूइंग द राइट थिंग। तो आम कौन बुझे द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज द रेंडरिंग माने कौन प्रतिपादन ऑफ जस्टिस जो न्याय को प्रतिपादन कोड कराई शुड हैव द बेसिस ऑफ मोरल एंड सेंस ऑफ डूइंग द राइट थिंग। नो वन शुड बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस व्हिच हैज नॉट कमिटेड और डू नॉट माने कौन ना किसी जन जो भूल काम कर पनिश कर दि जापर नहीं। तो यह कौन आउ ही हैज नॉट कमिटेड और डू और नॉट डन। नेक्स्ट देखिए हाउ डज यूटिलिटेरियंस सी जस्टिस माने उपयोगितावादी माने जस्टिस देखती ना यूटिलिटेरियंस सी जस्टिस उपयोगितावादी माने जस्टिस को अज ए पार्ट ऑफ मोरालिटी एंड डोंट सी जस्टिस टू हैव हाई प्रायोरिटी देन एनी अदर मोरल कंसर्न। से मैंने कौन देखना गोटे पार्ट गोटे कि नैतिकार गोटे पार्ट जस्टिस हो नैतिकार गोटे पार्ट एंड डोंट सी द जस्टिस टू हैव द हायर प्रायोरिटी देन द अदर मोरल कंसर्न्स आउ जो अदर मोरल कंसर्न अच्छी अपेक्षा से जस्टिस को कौन अधिक प्रायोरिटी मैंने अदर मोरल जो कंसर्न रही धारणा रही से गुड़क अधिक प्रायोरिटी न देकी जस्टिस को प्रायतः प्रायोरिटी दिखती। In particular, utilitarians think that we should promote goodness and may think that goodness can be found in a single good such as happiness. Happiness is found in flourishing माने समृद्धिशाली उत्कर्ष वेलबिंग माने सब हालचाल केमती कौन और डिजायर साटिस्फैक्शन इच्छा सब कौन साटिस्फैक्शन हो। यूटिलिटेरियंस आइडियाज ऑफ जस्टिस कनेक्टेड मोरालिटी टू द लॉ इकोनोमिक डिस्ट्रीब्यूशन माने कौन न्याय नैतिकतार गोटे नैतिक हिसाब से गोटे कौन नैतिक कनसिडर कर न्याय आईन बनाई इकोनोमिक डिस्ट्रीब्यूशन अर्थनीति को कौन बंटन हो एंड पॉलिटिक्स सब कौन इकोनोमिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिटिक्स। तो ये कौन यूनिट 2 किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो यार नेक्स्ट आम यूनिट 3 मुझे आपको सेयर करी जब आप पीडीएफ चाहती तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अच्छी जॉइन हैंड से मुझे आपको कौन पीडीएफ टी को सेयर करदेवी। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।